Hello, everyone. Welcome back to the Third Man Cricket Show once again with me, Abhinav Mishra. Well, क्या बात करें यार आज So there was this game today. It was called a final. India was in it, and it's the Asia Cup final. We wake up. थोड़ी starting में बारिश आ गई. We just thought normal day in Sri Lanka once again. But as you can see in the title, as you can see in the picture itself, Mohammed Siraj had different ideas today. पता नहीं क्या खाकर आए थे सिराज मियाँ आज. आई थिंक रिकॉर्ड बुक्स एक अलग सी किताब लिखनी थी आज मोहम्मद सिराज को, टाइटलिंग मियाँ मैजिक. And we did see Mia Magic indeed. I mean, what a brilliant way to rip Sri Lanka apart. I mean, can you even imagine something like this happening? I'm pretty sure ज़्यादा लोगों ने नहीं सोचा होगा ये कि जब मैच शुरू हुआ था we'll see India chasing only 51 runs in the final, and just like that 25 people are watching the stream. Please like the video, people. Subscribe to the channel, become a part of the Third Man family, do all the great stuff, and let's talk. Come on, let me know in the chat what was your feeling, what was your opinion of Mohammad Siraj here today. Ishwar Ayyar saying Siraj from Hyderabad rocks in Asia Cup final. तो हमने एशिया तो हमने कॉन्कर कर लिया है, ये तो हम कह सकते हैं सेफली. बट let's not get ahead of ourselves. This was India's day. This is India's day indeed. But we still have a job to do. We still need to chase 51. हमें लगा नहीं था कि यार ये मैच 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम तो सोच के आए थे कि यार अच्छा चेज मिलेगी या अच्छा एक गेम देखने मिलेगा एज अ फाइनल. अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं. सो आई मीन अंकित जहाँ पे जैसे कह रहे हैं सिराज का राज, यार सिराज का राज, सॉरी. Indeed, it was, man. I mean, how can we forget this day? I mean, 16 balls for 6 wickets, man. I mean, can you even imagine something like this happening in an Asia Cup final? We did see Ajanta Mendes do this against India. तो आज दूसरे एंड पे होके आज हमें अच्छा लग रहा है काफी, So yeah, 80 odd people watching the stream, 100 odd people watching the stream. Please like the video, people. Subscribe to the channel. Help us reach 3,000 subscribers today itself. And let's celebrate India's victory. It's fair to say कि यार हम ये मैच जीत रहे हैं. हम ये मैच जीत रहे हैं. हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यार हम ये मैच जीत रहे हैं. Anyways, let's take a few comments as well. Siraj is a find for the World Cup. Yes, I think this World Cup right now, Team India looks so together. ये जो togetherness है ना जिसकी हम बात करें, I think this was missing few days back or a few weeks back, building up to the World Cup. हमें लग रहा था कि यार थोड़े questions हैं अभी भी around the batting lineup and stuff like that. But अभी आज देख के लग रहा है कि यार we are a much settled squad in general as well. So anyways, let us talk about Mohammed Siraj once again. 90 odd people watching the stream. Please like the video, subscribe to the channel, everyone. अपनी अटेंडेंस लगा दो बस, मैं तो यही कहूंगा, एंड बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली. हार्दिक शेपिंग अप वेल बिफोर द वर्ल्ड कप. यस, लेट्स टॉक अबाउट हार्दिक पांड्या. 3 for 3. यस, लास्ट के 2 विकेट टेलेंडर्स थे, बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट टुडे. जैसे आज हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग करी है इन द लास्ट गेम जब हमने श्रीलंका को हराया था, आई थिंक वी सॉ a different Hardik Pandya as well with that second spell जहाँ पे उन्होंने consistently 140 के around bowling करी थी. I was really happy to see Hardik Pandya that way, and we need this Hardik Pandya to bowl in the World Cup as well, because वो जो luxury है जो हम हार्दिक पांड्या से expect कर रहे हैं, at least 6 overs, 7 overs minimum. I think now he is fit enough to bowl those overs in my opinion. So what are your thoughts? What are your opinions? About the Asia Cup itself. A big credit to the ground staff. Well, let's talk about that first. I think BCCI has announced, the Asian Cricket Council has announced a prize worth $50,000. Commendable job. I think we all need to give a round of applause to the groundsmen for the work they have done. क्योंकि लग नहीं रहा था कि एक टाइम पे looking at the conditions, looking at the ground, the pitches, शायद मैच ना हो. But prize money worth that amount, they deserve each and every penny of it, in my opinion, for sure. And yes, it's just 51 needed for Team India. I think the chase should begin anytime soon, क्योंकि खाली 15 ओवर हुए, तो so I'm expecting not a big break in between. Do let us know, let me know यार in the comments. Let's talk, have a nice chat about the Asia Cup in general, क्योंकि अब हम रिव्यू कर लेते हैं एशिया कप को, कि हमने एशिया कप तो हमने एक दिन में खत्म कर दिया. Ishwar is saying yes, well administered Asia Cup. I think
there were a lot of issues before the before the Asia Cup as well. Ki people talking about हमने UAE में क्यों नहीं कराया, because we were one of those as well that a backup option could have been to conduct the Asia Cup in the UAE. But the crowd support has been really good in Sri Lanka as well. I think Sri Lankan cricket has really grown in the past 2 odd years since Chris Silverwood has come in, and they have shown in the results themselves as well that how important a process could be for anyone for looking to build something good. And Sri Lanka has done that with Chris Silverwood. आज उनका दिन नहीं था, it's fair to say. It was India's day today. 5 changes again जो हमने रेस्ट कराए थे प्लेयर्स सारे वापस आ गए in the 11 to play the final, and we expected that to happen. हमें लग रहा था कि आज शायद हमें थोड़ी चैलेंजिंग एक इनिंग्स देखने मिल जाएगी in terms of say if Sri Lanka put up a 250 score or 220 score. It is not easy to chase these scores down in Sri Lanka as well. So I just feel हमने वो एक हमने क्या क्या कह सकते हैं एक क्वेश्चन हमने हटा दिया है वहां से. But we won the game quite convincingly is what it's fair to say in my opinion. Deepak is saying good bowling. Yeah, I think it's fair to say यार good bowling तो नहीं, हमने good से थोड़ी ज्यादा अच्छी bowling करी हमने. We have bowled brilliantly today. So I just feel one of the biggest finds of this World Cup will be Mohammed Siraj. Yes, he has been a good, I would say, a good part of the Indian setups in the in the Indian bowling lineup since his debut in Australia. And जो growth दिखी है मोहम्मद सिराज की in the past 2-3 years, it's really impressive. And हमें ये देखना है, because if we want to win the World Cup, we want Mohammed Siraj, Jasprit Bumrah, Kuldeep Yadav, our three ace bowlers to be in top form. And hopefully this is the case when we play our first game as well. Other than that, let's take a few comments. Thank you so much, Ishwar, for the lovely comment, the third man coverage. We really appreciate that. Other than that, what else can we talk about? Maybe we can talk about what are still the areas which India could address moving into the World Cup. The middle order batting, when we were playing spin, हमने ये पिछले स्ट्रीम में भी बात करी थी that it is possible कि we might face turning tracks a lot going into the World Cup. Yes, starting के 2-4 मैचेस में शायद हमें वो स्पिन या वो वो मूवमेंट ना दिखे, but as we go in the later stages of the World Cup, हमें वो पिच थोड़ी खराब होती हुई दिखने वाली है all over India, not just like anywhere we play. So I just feel हम थोड़ा सा स्पिन और अच्छे से खेल सकते हैं. Out of all our middle order batsmen, or maybe like our top 6 batters, I just feel KL Rahul is the only one who looks convincing in front of spin bowling right now. I mean, just on the small sample size जो हमने Asia Cup में देखा है, उसके basis पे I think KL Rahul is the only one who looks quite convincing. Ishwar is asking what will be the game plan now for Rohit Sharma. I think just go out and finish the game. Make it a final which no Sri Lankan fan wants to remember. 10 wickets से मैच जीतो. I think that is all the game plan should be right now. Should not think about यार 50 रन है तो हम किसी को ऊपर भेज देते हैं जिसको बैटिंग नहीं मिली या हार्दिक से ओपन कराते हैं. I don't want that to happen, क्योंकि winning the game for your team is a big achievement. I think the openers have to do their job, and Shubman Gill has to be out there मेरे हिसाब से, the way he has batted in the Asia Cup so far. I think Shubman Gill has to open. We could see Rohit Sharma, coming down the order. We have seen that in the past. In West Indies itself, हमने देखा था कि Rohit Sharma decided to come down the order, but not anymore. I think we have to all look at the fact that this is a final. अगर ये World Cup का final होता और हम 50 रन target कर रहे तो surely we would have not sent our middle order batters to open the inning. So just treat it like another final and just win it. Yeah, come on, let's get this job done really quickly. 51 runs to win of 50 overs. तो overs तो हमारे टेंशन की बात नहीं है. It's fair to say. The form of Tilak Verma and Shreyas Iyer. Yes, I don't know what is happening with Shreyas Iyer at this moment, only because we were expecting him to be a part of the main bowling batting lineup for Team India in the World Cup. क्योंकि नंबर 4 का अगर कोई पोजीशन था जिसके ऊपर मेरा कंटेंडर था, that was Shreyas Iyer. I don't know what suddenly happened with him, only because maybe Ishan Kishan is in such rich form कि शायद उनकी जगह ही नहीं मिल रही है, and it is not fair to drop Ishan Kishan in my opinion as well. Yes, there are still issues with this strike rotation जो कि बहुत लोग बात करते हैं, and I kind of agree to that. Yeah, so just like that, Ishan Kishan is opening with Gill, which I would take that. I think Ishan Kishan deserves the chance because he has played really well
as an opener for Team India in the past against since the West Indies series. I think he scored those crucial 50 runs in every game, every ODI. So I think he deserves it. And yeah, I think it's all about winning the game, with 10 wickets in hand. I think that would be a big achievement. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एशिया कप अब तक हुआ है जहां पे द टीम हैज बीन डोमिनेटेड इन दिस मैनर लाइक श्रीलंका वाज टुडे. यस, अजंता मेंडिस ने हमारे साथ भी ऐसा कुछ किया था, बट वो हो गया अभी, वो टाइम हो गया. उसमें भी हमने 170 के आसपास रन बनाए थे. वी डिड नॉट स्कोर 50-60 रन और समथिंग. सो hopefully we get this job done really quick in the next half an hour or so. I don't expect this to go मतलब पावर प्ले से ज्यादा भी. मेरा तो प्रेडिक्शन है कि यार ये तो 8 ओवर के अंदर ही खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से. ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है. आपका क्या प्रेडिक्शन है मुझे बता दो चैट में, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट इट. Dunit Velalage on screen, I think he's one of the finds for Sri Lanka in this tournament. And Carlos Brathwaite, the West Indies player, ex-West Indies player maybe, he said in the Under-19 World Cup that Dunit Velalage is the guy to watch out for in the coming years. And he was bang on. क्या बढ़िया bowling करी है. 20 साल का लड़का है. I think getting David Warner out, getting Virat Kohli out, getting Babar Azam out, getting Rohit Sharma out, getting KL Rahul out in your initial career of ODI cricket, I think it is a big achievement itself. Endorse your views. यार मेरे तो व्यूज ये है कि हमने बहुत अच्छा खेला है, एंड आई थिंक हम लोग ये मैच जीतने वाले हैं. सो अगर आप मेरे व्यूज के साथ एग्री करते तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल द गुड स्टफ. एंड इसी के साथ आई हैव अ न्यू, आई थिंक आई हैव सम कंपनी विद मी जॉइनिंग मी ऑन द शो एज वेल. अंकित, हाय अंकित, हाउ आर यू? वेलकम वंस अगेन. आई थिंक मैच सो के उठा था कि मैच मतलब जब अभी तू सो के उठा है, मेरे को लग रहा है कि इंडिया ने नहीं, not at all. I was just setting up my I mean सिराज ने तो like मेरा स्टूडियो का कैमरा चेंज कर दिया literally because it was so quick. But welcome to the show. I mean Abhinav, you have been going, but यार I mean who thought like कि ये वनडे में होता नहीं है, like T20s में होता है, but वनडे में like we were not expecting this kind of stuff from any pace attack या फिर any specific bowler. I mean complete domination from Siraj. I mean इससे बेहतर स्पेल लाइक वनडेज में बहुत टाइम से आई हैवंट सीन लाइक एग्जैक्टली. आई थिंक जस्ट अ वाओ स्पेल फ्रॉम it is fair to say कि यार आरसीबी का रिकॉर्ड सेफ है अभी भी. श्रीलंका ने आरसीबी, आई थिंक विराट ने आरसीबी का रिकॉर्ड बचाया विद दोस 4 ओवरथ्रोज. वो नहीं होता तो आई थिंक हम 49 से कम का स्कोर चेस कर रहे होते राइट नाउ. बट जोक्स अपार्ट, इंडिया, द इनिंग्स हैज बिगन. आई थिंक ईशान किशन is opening with Shubman Gill chasing 51. If you want, let's just get the scoreboard up really quickly. Let's see how to get that up. Yes, none for none in 2 balls for India so far. Ishan Kishan has played both the balls. Yeah, but anyways, Ankit, coming back to my stream जो मैं बात कर रहा था. So I was talking about what were the positives for Team India in the Asia Cup itself. What according to you were the positives? मुझे बता कि और हम क्या क्या एरियाज हैं जहाँ पे हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं. आई थिंक देयर वर मेनी. आई थिंक फर्स्टली तो जो मिडल ऑर्डर का डायलेमा था, आई थिंक काफी हद तक नाउ अब क्लैरिटी मिल गई. अगर इस लाइनअप के हिसाब से आई फील कि केएल राहुल एट 4 या फिर एंड ईशान किशन एट 5 इट शुड गो, और या फिर द अदर वे अराउंड जहाँ पे ईशान किशन एट 4 बिकॉज ही इज अ लेफ्टी, वो वेरी एक मिल जाएगा आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर जल्दी विकेट गए. सो ही ब्रिंग्स दैट वैरायटी. सो वो एक मिल गया. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक बॉलर्स में जो बहुत टाइम से था लाइक कि आई वाज ऑनेस्टली सेइंग कि शो पे भी बोला था कि मोहम्मद शमी शुड बी इंक्लूडेड समहाउ. आई स्टिल फील बट द वे अभी जो बैलेंस लग रहा है हमारा स्क्वाड, शार्दुल ठाकुर आई गेस ही वाज प्लेइंग टुडे बट जरूरत ही नहीं पड़ी लॉर्ड की. जिस हिसाब से सिराज ने वो लॉर्ड के सारे रोल्स से जो शार्दुल ठाकुर अपनी तरफ से करते हैं वो भी आज सिराज ने किया. एंड देन बाकी तो ओवरऑल अच्छा ही था. ये दोनों ही चीजें थे एंड आई थिंक काफी हद तक शॉर्ट है. शुभमन गिल ने फॉर्म पकड़ा है, विराट कोहली ने वो पाकिस्तान के हमने सेंचुरी मारी है, राहुल हैज रन्स विद हिम. सो एवरीथिंग लुक्स गुड. अब एक इसके बाद तो ऑब्वियसली ये मैच तो अभी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई डोंट सी एनीथिंग कमिंग अप. बट आई थिंक बॉलिंग विल बी, बॉलिंग टीम या फिर बॉलिंग जो हमारा कोर है, आई थिंक दे शुड बी प्रीटी हैप्पी. एंड आई एम होपिंग कि एक ही है एंड शायद एक और हो सकता है अभी लाइक कि आज के मैच में वॉशिंगटन सुंदर वाज प्लेइंग. आई एम नॉट श्योर कि हाउ इट विल गो बिकॉज 27 तारीख का 28 सितंबर है. 28 सितंबर तक आपके पास है वो. अगर अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर, दैट्स द ओनली थिंग. वहाँ पे शायद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जवाब मिल जाएगा. I don't think so. I think खाली backup kind of approach है ये for Akshar Patel. And to be honest, in the initial part of the World Cup, I do not even see Akshar Patel playing.
I just feel Shardul Hmm. Thakur is our first choice bowling all rounder, जो कि Yeah, who will bat at number 8. Jadeja at 7, Hardik at 6. I think 6, 7, 8 हमारा Hardik, Jadeja और Shardul ही रहने वाले हैं. Only because the pitches won't be turning from day one itself. World Cup में अगर हो रहे हैं, then it is a then you can expect a very low scoring World Cup. yeah, This year, but I don't think so. I think the pitches जो हम IPL में देखते हैं उसके basis पे अगर जाएं तो I think there will be a few pitches yeah, like Eden Gardens, Mhm. like Hyderabad, sorry, Yeah, Ahmedabad itself, Hyderabad for instance as well, जहाँ पे pitch Mhm. थोड़ी अच्छी carry देती है for fast bowlers. So Yeah, I feel initially Shardul Thakur will be our first choice. Yes, आज he is not playing only because the pitch is a turning one, and तभी yeah, Washington Sundar का नाम आया है, and plus that Sri Mhm. Lanka had a lot of lefties in the 11 as well. So other than that, yeah. I think it's a tactical decision. मुझे नहीं लग रहा कि यार अक्षर पटेल की injury is a big blow. Yes, I would have You feel loved. like कि नहीं, I mean apart from injury, like कि one more thing जो Washington लाते maybe a right arm option, and obviously lefty तो अक्षर and Washington वहाँ पे तो similarities है, but that one option if Washington brings, like I don't think Tilak Verma is part of the World Cup, so उस लिहाज से I feel कि अगर Washington सुंदर वो एक है, because अक्षर is going to do what जडेजा करेंगे, and उसके ऊपर भी हालांकि आगे जाके I think that is the only, I won't say query, but a thing India may look to resolve ahead of the Australia series. So वही है, let's see Washington will he play, और या फिर अक्षर पटेल will he be available till the Australia series, but I'm not sure कि क्या injury है, but we hope all comes good because of last I guess two more weeks यार to go मुझे into the मुझे आई जस्ट World Cup. फील दैट ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है ना, इट्स अ मेरे हिसाब से इट इज अ प्रॉपर बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि यार हम एक बड़ी टीम खेल रहे हैं. यस, दैट इज अ गिवन. Yeah, हमने पाकिस्तान को खेल लिया है, हमने श्रीलंका को खेल लिया है, हमने वी हैव प्लेड सम गुड स्पिन बॉलिंग साइड्स ऑलरेडी, बट Hmm. ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट Yeah, चैलेंज. एंड आई थिंक जो पिचेस हम देखने वाले हैं फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, दैट इटसेल्फ विल बी अ बिग टीजर Hmm. फॉर द वर्ल्ड कप. क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जो पिचेस देख रहे हैं उसका लिटरली ऑपोजिट हमें वर्ल्ड कप में देखने मिल जाए. आई थिंक वही सेम yeah, टाइप की पिचेस हम देखने वाले हैं. एंड द आईसीसी जो भी मैच होता है, जो भी पिच बनती है फॉर द वर्ल्ड कप, द आईसीसी रिव्यूज इट प्रीवियसली लाइक बिफोर हैंड इटसेल्फ. सो yeah, आई थिंक राइट नाउ धर्मशाला की आउटफील्ड पे थोड़ा uh, क्वेश्चनेबल है. yeah, Other than that, I think most of the pitches are rated really well in India as well. So I just feel ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज रहेगा, that will be a build up, a proper build up for the World Cup in terms of pitches, condition, dew factor, whatever. क्योंकि ज्यादा turn around नहीं है between the series and the start of the World Cup as well. Other than yes. that, 7 for no loss. Yes, India needs only 44. मेरा अंकित, मेरा prediction था कि 8 ओवर में बनने वाले हैं रन. तेरा क्या prediction है? Can be anything, maybe आठ ओवर नहीं, because हाँ यार, I mean थिक्सना भी नहीं है, so chances है I think inside 10 overs ideally होना चाहिए, but Yeah. I mean inside 10 overs I feel can, unless if we lose wicket तो शायद फिर थोड़ा गेम प्ले so slow हो जाएगा, but apart from that I don't see that coming, so it should go well where we reach the Yeah. target. I think around 10 overs should be good. हाँ, मतलब पावर प्ले के अंदर ही खत्म होने वाला मैच, ऐसा मुझे लग रहा Yeah, है. एंड वंस अगेन कमिंग बैक, सो बाकी के भी मैचेस चल रहे हैं यार. आई मीन यस, इंडिया इज विनिंग द yeah, एशिया कप, बट क्विंटन डिकॉक played his final game Hmm. for South Africa today. I think मैंने स्कोर देखा था. I think South Africa have put up 315 लास्ट में. I think फेक्ले क्वायो ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी है एकदम एंड में. Yeah, बहुत ही चौके छक्के मारे in the last overs. They Hmm. were 281 for 9 at one point, and from there they reached 315. क्या लग रहा है South Africa winning this series? Because शायद there are only 4 other teams or 5 other teams जिन्होंने 2-0 series down होने के बाद they have ended up winning the series. So I yeah. mean, do you think South Africa is winning this game, or do you think fancy Australia to chase this down? शुड बी, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का भी बैटिंग लाइनअप मुझे, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड. आई थिंक ये जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सीरीज एंड आई थिंक वन मोर जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड थी, ऑब्वियसली वो खत्म हो गई है, बट आई थिंक the way these heavy teams are coming up with the scores of 400 350, and let's not forget कि इंडिया में जो है, इंडिया में ही ऑब्वियसली होगा, बट मोर इम्पोर्टेंटली आईसीसी ने कहा भी था कि दे आर एक्सपेक्टिंग बैटिंग फ्रेंडली पिचेस फॉर द वर्ल्ड कप, सो उस लिहाज से दिस इज जस्ट पावर हाउस ऑफ 3-4 टीम्स एट द सेम लेवल. लाइक इंग्लैंड ने भी वो किया था 300 350, न्यूजीलैंड डिड इट, देन द लाइक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका तो अगेन 400. सो दिस इज जस्ट, आई मीन चार टीम्स ऐसे, वी से सेना, आई मीन फॉर इंडियंस के लिए हम सेना कहते हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ ऑपोजिशन. बट ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एज यू मेंशन की चेस कर सकते हैं यार. आई मीन
बैटिंग लाइनअप तो उनका भी उतना ही तगड़ा है जितना साउथ अफ्रीका का रहा है Yeah. थ्रू आउट दिस सीरीज, सो इट विल गो वेल आई थिंक। आजकल वो 300 आई डोंट थिंक वो पहले ऐसा रहा है कि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, इट कैन बी इजी। इफ यू रिमेंबर वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो 7 मैच की सीरीज थी इंडिया में 2013 में, आई थिंक वी हैव सीन व्हाट कैन हैपन इवन इफ द स्कोर इज 350 370, it is chaseable. Yeah, true. I agree. 17 for no loss, 1.5 overs, 34 more runs needed. लग नहीं रहा यार हम एशिया कप फाइनल की बात Hmm. करें, बट या दैट वाज द गेम जो हमने हमने हमको मोहम्मद सिराज ने दिखाया है आज. Brilliant spell. I think Yeah, the kind of deliveries he bowled. We have to say that loose shots as well from the Sri Lankan batters, especially Dhananjay De yeah. Silva, the way he got out. Then I think the left-handed Hmm. batter, I think it was Asalanka who got Asalanka. out in the covers as well. Yeah, I think there were some loose shots. I Hmm. think लीव करना आज सोचा था श्रीलंका बैटर्स ने कि हम बॉल एक भी लीव नहीं करेंगे आज, and that's the reason they ended up Yeah. scoring so many runs today on the board as well. So Hmm. other than that, there weren't bowling was a positive, I would say, but we expect yeah, I think एक और चीज से याद आ गई मुझे कि we wrapped up the tail really quickly. We did not. We usually don't do that in any form of Yeah. the game. I think wrapping up the tail Hmm. is a big has been a small issue for Team India in the recent past. But other than that, Hmm. काफी अच्छी. I think fielding was good. But start ना अंकित मैंने stream में ऐसी करी थी कि यार this Indian team looks together more than ever before. You know उससे Hmm. मतलब Yeah. there's the things you see on the TV यार, मतलब साथ में हंसना खेलना वो सब जो हम Hmm. देख रहे हैं. I think we are seeing this more Yeah. often compared to what was in the previous months जहाँ पे हम question उठा रहे थे कि यार Hmm. are we feeling a bit detached with the Indian side? Not right now at this moment. I think this side will be challenging for the World Cup. Let's not get ahead of ourselves. Yes, we have only defeated a side which is up and coming in Sri Lanka in the final itself. But हमें बहुत बड़े बड़े टेस्ट हमें फेस करने. There is England, there is Yeah. Australia, there is Pakistan once again, there's South Africa, there's New Zealand. हमारे I think Yeah. it's fair to say a pain in the backside. I think New Zealand they are coming to play the World Cup as Hmm. well. But yeah, I Yeah. think it should be a good World Cup. I think this looks a strong Indian side already. But yeah, my Hmm. next question is around the middle order once again. Now that Ishan Kishan is opening the batting, ईशान किशन को हमने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते देखा. आई थिंक अगेंस्ट पाकिस्तान जो हमने इनिंग्स देखी, दैट वाज प्रोबेबली द बेस्ट इनिंग्स आई हैव सीन फ्रॉम ईशान किशन सो फार इन हिज करियर. और वैसी इनिंग्स Yeah. में देखना चाहता हूँ फ्रॉम अ मिडिल ऑर्डर बैटर हु इज कमिंग इन दैट सिचुएशन. श्रेयस अय्यर का नाम था उसके Yeah. पहले, ही विल बी प्लेइंग इंस्टेड ऑफ ईशान किशन मे बी व्हेन ही इज फिट. Now does Shreyas Iyer go into your 11, or do you think this is the most settled batting lineup India can have? Yeah, obviously, I think this is settled. अभी I mean, I don't see any point. अभी चेंज करके तो फायदा ही नहीं है. अभी this was the last match. अगर होना भी था, I was expecting अगर श्रेयस अय्यर के लिए कोई practically चांस था, obviously अब आगे भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज है. But if India are looking that again as a series, as a कि आपको टेस्ट करना है, you want to change something, you want to try something, then that doesn't make sense. Like honestly, अब इतने सारे मैचेस, I mean 20-25 मैचेस तो खेले हमने. So अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है, it is going to be a प्रॉपर सेटअप जहाँ पे जो आपकी 11 है जो आज खास करके खेल रही है. आई वुड लाइक टू सी द सेम थिंग इन द नेक्स्ट अपकमिंग या फिर जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बिकॉज हो सकता है बॉलिंग में यू कैन ट्राई टू रेस्ट समबडी, वो दैट इज एक्सेप्टेबल. बट आई डोंट सी लाइक कि जैसे हमने मोहम्मद सिराज, आई मीन सॉरी मोहम्मद शमी को, आज नाम भी सिराज ही आ रहा है, आई मीन गलती से भी क्यों ना हो, बट मोहम्मद शमी हो गए या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, आई डोंट थिंक सो इजी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप. If it is No, एक आध मैच के लिए, but apart from that, as a rest and not as a anything where you want to try out in the World Cup. So वो एक है बैटिंग में तो बैटर्स क्यों, I mean they will like to rest. I mean बैटिंग करना तो सबसे is it's like the thing you love the most, which I think बैटिंग को I don't want to see any changes unless कि कोई fair enough. इंजर्ड हो जाए जो हम नहीं चाहते. बट all looks good अभी, everything is good. I mean ये टूर्नामेंट भी अभी लगभग जीत ही जाएंगे. सो एक अच्छा नॉकआउट का जो हमारा थोड़ा प्रेशर था मल्टी टीम टूर्नामेंट्स में, वो भी Yeah. थोड़ा कम हो गया. सो इट्स गुड टू गो विद टूर्नामेंट विन, मल्टी नेशन टूर्नामेंट विन ahead of the World Cup and Australia series. I think it should be something where out or we play with the team who's going to be part of the World Cup as well. Fair enough. I think Rohit Sharma का record था कि that he has only lost one final so far, and that was the World Test Championship final as a captain. और that record continues कि Hmm. यार that will stay as one game only, क्योंकि I'm not expecting India to get bowled out in the next 23 runs. So
Hopefully, the record stays intact. Shubman Gill has started really well alongside Ishan Kishan. Some brilliant Yeah. boundaries, timing तो बहुत प्यारी लग रही है. I think 2 बॉल में 2 चौके जड़ दिए हैं अभी. Hmm. ट्विटर पे थोड़ी बहुत बातें चल रही थी. We still have a few areas to discuss. I don't know. I mean, right now, I think we should just celebrate what we have done today itself. What Siraj has done in the in the game. So 4 slip थे एक point पे लग नहीं रहा था हम ODI खेल रहे हैं या Test match खेल रहे हैं. 4 slips in place. There was no mid wicket. There was no mid on as well at one point. So let's see how this moves ahead because ये मैच तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया. It's fair to say. एंड खत्म इसलिए हुआ बिकॉज मोहम्मद सिराज आज बिरयानी में कुछ और डालकर आए थे अपने अपने प्लेट में. सो other than that, Ankit, what else can we discuss? Do we have any other news I from think the one cricketing? thing which we actually, we can try to just go on is I think वो है Sri Lankan की batting. I think Yeah, like throughout the tournament, the game against Pakistan, I think they did really well. Obviously ऐसा होता है like one days में होता है. I mean this is not the thing कि पहली बार ऐसा कोई टीम 50 पे ऑल आउट हुआ है. इसके पहले भी होता है. बट अगेन द टाइमिंग नाउ आप एक नजरिया हो सकता है कि समटाइम्स यू वांट कि ऐसा आपके साथ हो वर्ल्ड कप के पहले सो दैट कि वर्ल्ड कप में ना हो ऐसा होता है. ऑब्वियसली आप इंटेंशनली नहीं करना चाहते बट दिस इज गोइंग टू बी अ गुड रियलिटी चेक. ऑब्वियसली फाइनल था शायद ये गेम नहीं चाहते yeah, होंगे बट बेहतर ही बोलेंगे कि एशिया कप में हुआ है उससे अच्छा वर्ल्ड कप से अच्छा तो एशिया कप में हो ऐसे ही कोच कहेंगे. yeah. बट डिसअपॉइंटिंग थोड़ा एंड आई वाज अ बिट सरप्राइज. आई मीन शायद पिच कंडीशंस ऑब्वियसली कह रही थी कि दे शुड हैव बैटेड फर्स्ट बट आई वाज लुकिंग जस्ट एट देयर स्ट्रेंथ throughout this whole tournament and एक चीज लगी कि they were looking a bit better side when it came to batting second and I was doubtful कि अगर श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट I was doubtful कि I was कि 200 भी नहीं बना पाएंगे ये फीलिंग था but I was not expecting शायद 50 रन पे ही कहानी निपट जाएगी. So one thing short selection because bowling कोर इनके नहीं है but बैटिंग कोर तो यही होगा वर्ल्ड कप में. So they will expect like कि something to go good ahead of and they avoid mistakes going into the World Cup because World Yeah, I Cup I mean, I'm think not judging Sri Lanka yeah from this one game. I think they are probably the most developed side in the past yeah couple of years. I think हमने सारे big names को जाते हुए देखा है and we've got young players, जो step in कर रहे हैं. Like Vela like yeah now, it's a great example. Then we had Dasun Shanaka who started leading the side. We had Dhananjay De Silva stepping yeah up in big roles and with big runs and crucial wickets. Now Charit Asalanka, picking up 4 wickets against India. So it is a good side. It's still a young side. It's I think they are still a bit inexperienced, I would say, for the big occasion. Hmm. And I think this could be the only reason they अगर इनके पास थोड़ा और एक्सपीरियंस होता है this team could have been like the dark horse for the World Cup. I'm not saying in terms of winning, but going having like a long run in the World Cup. But I think yeah inexperience है थोड़ी side, and that's the only reason जहाँ पे हम शायद yeah sides like South Africa could beat them, or maybe Pakistan could beat them moving forward. So other than Hmm. that, I think Sri Lanka will have a good World Cup from their expectation. I think expectations ज़्यादा high भी नहीं है fans की from their side, only because yeah they know that there are other favorites for the World Cup and other strong teams, more experienced teams than Sri Lanka in the World Cup. But yeah, I think Yeah. I'm very impressed. I would watch Sri Lanka in the World Cup very closely. I think I really like the way they play their cricket. एक प्रोसेस चल रहा है उनके उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके सिस्टम में, उनके मैनेजमेंट में, एंड दे आर लिविंग अप टू दैट प्रोसेस इज व्हाट आई वुड से. Yeah. 34 for no फिलहाल loss, अगर देखें 17 तो more runs शुभमन needed. गिल या लाइक शुभमन गिल अगेन जो Yeah. बैटिंग करी थी आई थिंक बांग्लादेश के अगेंस्ट आई थिंक इज Who जस्ट is your who is your player of the series for India? टफ वन. बॉलिंग में मोहम्मद सिराज ही हैज प्लेड. अगर मोहम्मद सिराज का आई मीन आज तो कुछ गलत बोलना भी एक गुनाह हो जाएगा बट मोहम्मद सिराज इसके पहले आई वाज लुकिंग कि मोहम्मद सिराज ने भी सारे गेम शायद नहीं खेले. मीनवाइल वी हैड शमीर एंड एक आध में तो हमने बॉलिंग भी नहीं करी जो हमारा फर्स्ट गेम था पाकिस्तान के अगेंस्ट. सो उस लिहाज से तो बहुत टफ ओवरऑल एक कंबाइंड परफॉर्मेंस रहा है बट टू पिक यार आई मीन फाइनल में किया जो सिराज ने सो वो बायसनेस रहेगी शायद सिराज. बट आई वोंट माइंड जो शुभमन गिल ने किया है. विराट कोहली के लिए मुश्किल है बिकॉज विराट कोहली ने एक ही बार बैटिंग करी है सो उस लिहाज से मुश्किल है. लाइक्स ऑफ रोहित शर्मा इज बैटेड वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट. फॉर मी शायद मोहम्मद सिराज यार फाइनल में 6 विकेट्स लेना मतलब इट्स लाइक स्कोरिंग अ डबल सेंचुरी एज अ बैटर. सो Yeah. उस लिहाज से फॉर मी मोहम्मद सिराज बट कैन बी एनीवन एज वेल एंड आई वोंट बी सरप्राइज एट आउट. हो सकता है कुलदीप यादव ही कैन आल्सो प्ले दैट एक दावेदारी हो सकती है उनकी भी बिकॉज ही हैज बॉल्ड रियली वेल एंड सारे मैचेस के लिए. सो कुलदीप यादव कैन बी द वन बट आई वोंट बी सरप्राइज इफ इट इज मोहम्मद सिराज फॉर टीम इंडिया.
Fair enough. I think for me, it could be either Kuldeep Yadav or Shubman Gill. I like personally, I would give it to one of these two only because Shubman Gill का patch बहुत खराब चल रहा था before the Asia Cup. And एक ही साल में I think शुभमन गिल का अच्छा पैच आया है, खराब पैच आया, and he has come out of that खराब पैच as well. I think a lot of credit has to go to Nepal. वो जो innings आई थी नेपाल के against, I think that was the game changer. That was the turnaround शुभमन गिल के लिए. उसके Yeah. बाद we seen him play really well against Pakistan with that 50. Then we saw a big 100, against Bangladesh in a losing Yeah. cause. But just to have that temperament, just to show that maturity, I think that is the only reason Shubman Gill stands out more than Mohammed Siraj for me. Because अगर हम मोहम्मद सिराज का आज का मैच अगर हम हटा दें, then I don't think he has he is a strong contender for the trophy. So I just feel Shubman Gill or Kuldeep Yadav are my picks so far. But other than that, I think the entire team has done really well. अगर हम देखें तो पूरे अगर हमारी जो फर्स्ट 11 की हम बात करें, Rohit Sharma has got runs, Shubman Gill has got Yeah. runs, Virat Kohli got runs, KL Rahul got runs. I think Ishan Kishan got runs against Pakistan. He could get a few more today as well. Hardik Pandya got runs against Pakistan. Jadeja, maybe he lagged a bit in runs, but he did well with the ball, being economical. Shardul Thakur on and off rahe hain, but he still picked up a few wickets in like breaking the partnership against Nepal and stuff like that. We had Kuldeep Yadav, brilliant form. Jasprit Bumrah, good to see him bowling that pace and those line and lengths once again. So a fit Jasprit Bumrah is a big asset for Team India, and in the end, Mohammed Siraj. So out of 11, I think 10 or 9 players have done their job in the competition. But yeah, I think it's fair to say we were the best side in the Asia Cup, and we deserve to win the title. Yes. Yes. Definitely. Yeah. 13 more runs needed. I think we'll end the stream just as soon as India wins the game. Yes. Performance to extra I नहीं है, but yeah, Ishan Kishan did open the batting with Gill. Madhushan opening, yes. I don't know. I mean, but let's credit Sri Lanka as well at from this point of view that Lahir Yeah. Kumara was out, Vanindu Hasaranga was out, a couple more senior players were Dushman out. Chamila. Dushmanta Chamira, and there was one more person, I don't remember his name, but he was out as well. I think Ramesh Mendes or something, if he plays in the ODI format. But having those players I guess out, and was it Madhushanka? I guess Madhushanka, left arm pacer. Yeah. yeah, maybe, and there was one Vishwa Fernando, if I'm not wrong. So And then but yeah, Diksana. yeah. Anyways, I guess the whole core, the main group of their bowling was out apart from Patirana. I guess yeah, so he my should be point is playing around well. that year, even with these players, these senior players injured, they Yeah. end up coming to the final, reaching the final, beating Pakistan in a big run chase. Yes, एक time पे लग रहा था कि यार they will chase it down easily, but they end में थोड़ा thriller kind of game बन गया. And but yeah, I think credit to them as well in terms of reaching the final, playing against India. Maybe before the final they would have still thought कि यार हमारे पास थोड़ा तो चांस है, like a 25-30% chance that we can still beat India because हम उनने हमको ट्रबल करा था in the league game or like super force game. So but yeah, वो hopes तो खराब पानी फिर गया उनके ऊपर. But yeah, a word on Sri Lanka and their run in the Asia Cup. And are Sri Lanka, like, would you give Sri Lanka a chance? How far in the World Cup? Like, where would you see them ending up? In the table, जो कि 10 टीम की टेबल बनेगी. See, ideally, uh, Asian teams जो है या फिर India, Afghanistan, Pakistan, and the likes of Sri Lanka, I think these are the 4 teams who will be playing in World Cup. So इसलिए आज से ideally it should go like कि 2 Asian teams, considering India obviously host their favorites रहेंगे, not just for the in the top 4, but the potential favorites after the kind of performance and ये form लेके जाएंगे तो obviously. So India, and I'm hoping, ये मेरी चाहत है, but that doesn't come out in my prediction part कि श्रीलंका, see, the number 5 spot भी हो सकता है. I mean, वो भी as you mentioned कि fan से भी क्या expectations है, obviously एक अच्छी team है, हो सकता है इनका main group आ जाए and they might just kind of dominate the whole tournament against big teams like of South Africa, New Zealand जैसे teams को, even Pakistan को they can trouble. They have shown in the recent game, I think couple of days back. So काबिलियत है. So अपने स्ट्रेंथ को बैक करना पड़ेगा. आई फील लाइक कि व्हेन यू लुक एट दैट टीम ना, मुझे ओवरऑल उनका सेटअप लगता है कि दे आर अ गुड टीम वेयर दे कैन जस्ट चेस टारगेट्स ओवरऑल. एंड मुझे लगता है, इसलिए भी लगता है बिकॉज इफ यू लुक, पतिराना कैन डू वेल. आई थिंक डिफेंडिंग के टाइम भी कर सकते हैं, बट बॉलिंग फर्स्ट में ही गेट्स दैट लग्जरी. फील्डिंग अच्छी आपको मिल सकती है. सो दे शुड बैक देमसेल्व्स. एंड आई वाज जस्ट सरप्राइज कि टॉस जीत के आई थॉट कि मे बी बॉलिंग करेंगे.
डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ, बट फिर बैटिंग करी, वो भी गलत नहीं थे। आई मीन कंडीशन जो थे, बैटिंग फर्स्ट वाज नॉट अ बैड चॉइस, बट इट वेंट रॉन्ग दैट वे। बट आई एम होपिंग कि 5 wins आउट ऑफ 9 कैन बी गुड, मे बी Fair 5 wins कैन बी सफिशिएंट इनफ टू रीच इन द टॉप 4। सो उस लिहाज से या, बट मुश्किल भी हो I गया। don't आई मीन know. साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, I think न्यूजीलैंड वोंट बी you'd दैट। still need at least 6 wins in my opinion to make it to top four because top two में से there I'm are assuming बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे नहीं, but 6-7 maybe wash out games, and इसलिए I guess जो no, 2019 no, का but वर्ल्ड you कप था, I cannot say that remember। Sri Lanka के games wash out होंगे. I'm just saying only because, and first of all, I do not see many games getting watched. 6-7, I think मेरे हिसाब से is a big number. I think the cricketing season starts around November itself, and I think we are in good condition to play most of the games. But I'm just saying, अगर हम बारिश को हटा दें, if even if you want to qualify for the top four, you need at least 6 wins in my opinion out of 9 games you see. So Hmm. because India won how many games? Eight games. They lost against England, I think. And the Yeah, one game was wash out against New Zealand. yeah, so I think if you win 6 games, I think it's fair to say you make the top four, 6 or 7 maybe. Hmm. But I think 4 or 5, you still are in a position of that net run rate wala, being into contention. But yeah, Hmm. I still see Sri Lanka winning more than Yeah. three or four games easily. I can see that happening. I Hmm. think I see them beating Netherlands, maybe Yeah, Afghanistan Bangladesh as as well. well. So Afghanistan, maybe they beat them as well, and maybe one of the big sides like a South Africa or something. So I just feel Hmm. Sri Lanka could be in that middle five wala position wale pe right now. I'm just Yeah. Hmm. hoping they are there. Yeah, so just 5 more runs needed for India to lift the Hmm. Asia Cup once again and to conquer Asia. Next step is world. Can we conquer the world? Is the question which people will Hmm. ask from tomorrow onwards. Hmm. So, Ankit, Yeah. who are your favorites for the World Cup? I think India, obviously, I think कहने के लिए, I mean 10 टीम का टूर्नामेंट है, and honestly if you see, for me 5 teams are on the earth, जहाँ पे सेना आ जाता है, and India will obviously, as I think they should go as favorites as well. So 5 teams है, but really like combined देखा जाए तो out of this, जिस टीम का ना bowling unit अच्छा होगा ना, they are going to win the tournament because जो सीरीज मैंने अभी अभी जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड की ले लो आप, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की, इनके आप देखो तो बैटिंग इनके बैटर से रन बनाए, लेकिन 300 350, आई मीन इमेजिन ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग यूनिट, ऑब्वियसली स्टार्क एंड ऑल नहीं है, बट ओवरऑल जैम्पा एंड ऑल, मार्श, स्टोनिस, दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप लाइनअप। सो अगर बॉलिंग कोर आपका 400 रन खा रहा है वर्ल्ड कप के पहले, नॉट अ ग्रेट साइन, इरिस्पेक्टिव आपकी बैटिंग कितनी स्ट्रांग है। बट आई फील कि जिसकी टीम में बॉलिंग तगड़ी होगी, जिसकी टीम में वो दम होगा कि 200 का टारगेट है, 180 पे सामने वाले को ऑल आउट कर दिया, दैट काइंड ऑफ टीम इज गोइंग टू विन द टूर्नामेंट। सो उसके Yeah, लिए मे बी पाकिस्तान एज वेल, आई एम नॉट श्योर कि नसीम शाह का क्या सिनेरियो है, बट इफ इज बैक, उनका भी बॉलिंग यूनिट अच्छा करना चाहिए, बट स्पिनर्स थोड़े अभी फिलहाल उनके काइंड yeah. ऑफ, और इंडिया में आप चाहते हो कि स्पिनर्स आपके फॉर्म लेके आए, सो वो एक उनके लिए लैक कर रहा है। आइडली टफ वन, बहुत मुश्किल है। आई विल गो विद साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड इंग्लैंड। आई थिंक आउट ऑफ 3 में से ये दो दो टीमें फाइनल्स खेलेगी, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड इंग्लैंड। I feel it's going to be an India Australia final. I don't know. I just have a gut feeling about India and Australia being in the final today on 17th of September. Uh, England लोग कह रहे हैं England have a chance. I just feel they might struggle with the competition in the later stages जब जहाँ पे spin शुरू होती है ज़्यादा. I think they are not that well suited to spinning या conditions. That's my only reason. I think South Africa, I don't see them, giving a tough fight only because I've seen how they play. I've seen the series against Australia. I think they were really good. And sorry to cut या you off. I think we have won the Asia Cup just like that. या Yeah. So congratulations to everyone, to every Indian fan. India win the Asia Cup once again. I think कितना time हो गया? How many times have you won the Asia Cup now? 8, this one is the 8th time. Eighth time, yeah, and we have I think we have broken a lot of records in the process as well. But yeah, coming back to that point, South Africa को मैंने देखा, I think they still lack a bit in the middle order, in the finishing. I think they do not bat very deep. I think Marco Jansen comes in at number 7 or something, which I think could be a problem on tracks in India. So I think you need a bit of batting depth in these conditions, and South Africa unfortunately don't have that. So that's the only reason. I think my favorites are just three. I think India, Australia, and one of England or Pakistan. I think
one of the other two could be a dark horse in terms of Mm. lifting the cup, not like making it to the semi-final. Mm. Yeah. या अंकित सो क्या करें और क्या बात करें? आई थिंक वी वन द गेम क्वाइट कन्विंसिंगली. हमने Yeah. 8 ओवर कहा था, आई थिंक 6 ओवर में हमारे रन बन गए, सो आई दैट इज थिंक अभी तो नेक्स्ट विल बी ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया सीरीज. आज तो ऑस्ट्रेलिया साउथ ऑस्ट्रेलिया नहीं, आई मीन हाँ, ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमारे लिए. एंड आज जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सीरीज चालू, आई थिंक वो भी खत्म हो जाएगी. सो छोटा सा विंडो मिला है ब्रेक के लिए. आई मीन नॉट ऑब्वियसली एक बड़ा ब्रेक फैंस के लिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द यू नो क्रिकेट जो है अभी शायद नेक्स्ट आई डोंट सी एनी सीरीज. एक बांग्लादेश न्यूजीलैंड सीरीज है, आई थिंक वो बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक आई उनके थिंक लिए देयर एक इज अलग प्रॉब्लम चल रही है. या आई थिंक देयर इज न्यूजीलैंड बांग्लादेश न्यूजीलैंड सीरीज विल बी कमिंग अप. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक छोटा सा ब्रेक जो खास करके इंडियन फैंस के लिए या फिर जो भी बड़ी टीमों से, आई थिंक उनके लिए ब्रेक है. सो टेक दिस ब्रेक एंड उसके बाद तो फिर वर्ल्ड कप बहुत बड़ा है नहीं, आई ऑब्वियसली थिंक देयर इज थर्ड मैन पे. इंग्लैंड एंड आयरलैंड एज वेल, इवन जहाँ पे इंग्लैंड की मतलब फर्स्ट स्ट्रेंथ स्क्वाड तो है नहीं फॉर श्योर. यस, बट इंग्लैंड आयरलैंड. या yeah, I think those are the 2 3 series is left. India, Australia, of course. Jahan pe I think we'll see a pretty similar Indian side play against Australia. And या yes, in less than 3 weeks, we'll be talking about the World Cup, the first games of the World Cup, the first round of the World Cup. I really like this format of what do you say, the राउंड round ऑफ robin रॉबिन. thing. Yeah, the या round robin format. I think it is much more competitive. It is much more suited to या the World Cup because group stages में there is possible कि यार आपका एक या दो मैच में वॉश आउट हो जाए, then you're literally out of the हाँ. competition itself. So I think I really like this round robin वाला format should be continuing. I think 92 पे हमने last देखा था, then we saw it in 2019. It worked really well. And उसके अलावा we have only seen group stages like 5 6 की टीम बना के we play group games. So I just feel that is not the right way to go about it. This gives every team to face या each other before like the knockout games as well. So yeah, I Abhinav, think that. before we actually, wrap up, I would like to know anyone from Joe viewers, I think, Abhinav, one potential upset in the World Cup, like from the likes of Afghanistan, Bangladesh. You see any of these teams या फिर कोई आपके हिसाब से एक मैच जो अपसेट हो सकता है एक एशियन टीम के लिए, या फिर कोई बाकी नेदरलैंड्स भी है. सो यू फील एक आध हो ऐसा गेम जो शायद सबसे बड़ा अपसेट हो सकता है. I 2019 think में अभी प्रिपेयर I हुआ think था, Sri बट Lanka is there in my pick. I think Sri Lanka will be beating one of the top sides in the World Cup. Could be a Pakistan, could be a South Africa as well. So I think one of these two games is my pick for an upset. Other than that, I mean, you have Netherlands playing, you have Afghanistan playing. You expect these teams to win at least 1 or 2 games. Can I you just say expect like कि not like कि likes of Afghanistan, because 19 में थोड़ा टैग लेके आए थे कि कुछ तो करेंगे लेकिन एक भी no, no. मैच I नहीं जीत think पाए. इस they बार have can they played some usually good be cricket. three Yeah. four wins for them? No, no, not 3 4. I think 3 4 is I a mean bit too three much. two max. Yeah, I mean, but I think I can see them not staying winless in the competition. The only team, Yeah, first of all, I don't see any team staying winless. I think वो जो last का जो spot है could it doesn't matter anyways. But Netherlands being there, maybe Bangladesh being there only because जो it's not a good phase right now. Bangladesh cricket is in, so I just feel these two could be the bottom sides. Other than that, उसके अलावा तो numbers matter भी नहीं करते. The only position which matters is the top four for all the teams. yeah, आप जहाँ पे finish करो, top two में if you finish करो, so one play four and two play three if I'm not wrong. yes, Yeah, so इसलिए you want to finish at the top of the table so that you get maybe a side who is like an underdog for at number four. So if India finishes yeah, top, there is a very high chance you could see us reaching the final by beating an underdog. So yeah, that is pretty much my opinion on that. But yeah, उसके लिए तो अभी time है. I think we are way ahead. We are thinking way ahead of its time right now. 3 हफ्ते में I think once we get into the initial stages of the World Cup, the first round, the second round, the third round, then it is fair to say कि जब हम क्योंकि हम लोग we are playing Australia, we are playing Pakistan back to back if I'm not wrong. So उसमें से एक भी गेम हम हार नहीं सकते. Is my opinion. I think अगर वहाँ पे हारते then kind of the whole complexion of the table changes. yeah. So I think दो मैच अगर इंडिया हारती है तो then I don't see them even you know then I just see them barely making the top four because other teams could end up winning most of the games. So, but yeah, it's all ifs and buts at this moment. Yeah. Once the tournament begins, जब भी हम देखेंगे कि कौन सी टीम अच्छे से handle कर सकती है pressure, then we'll talk about it even more in depth. So other than that, we'll join you guys once again when we have the India Australia series. I think it's Yeah. starting soon. I think in a week's time or something.
And yeah, then we'll talk about the build up to the World Cup and analyze all the squads once again. So for that, Yes. just like the video, subscribe to the channel. जो अभी देख रहे हैं अभी कर लीजिए, जो बाद में देखने वाले हैं बाद में, just do it. Become a part of the Third Man family. Help us reach 3,000 subscribers before the start of the World Cup. Till then, it's Hmm. me, Abhinav Mishra, signing off. Good night.